Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening, all the participants. I'm so honored that I'm interacting with one of the top, the most respected profession in the world. That is being, the judicial officers in the province of Sindh. And all of us understand and know that delivery of justice, it is very important for societies, and we definitely remember the saying of Winston Churchill once he was asked to whether they will win the war, and his reply was, if our courts are working well, then definitely we will win the war. So it is so important that the whole society depends for justice on the courts, and it doesn't matter whether these are lower courts or higher courts. They have equally important role to play in the betterment of the society. So today I will start from saying that a few years back there were so many judicial reforms in Pakistan, and a lot was done, and there was so much of material on the internet and in the newspapers too, and definitely there was a lot of effort gone in that process. Uh, but before joining this presentation today, I have discussed the issue with some of my friends in judiciary, and I wanted to understand the impact of all those reforms and what is the situation now, and how that is perceived by the society and by the judiciary itself. So I would say, just to give an example, that my real brother, younger brother, he died in October 2020. His widow, along with three young children, one of them is just 2 years, they are going to the court, attending to the court for getting a guardian certificate, because some property and mother has to get a guardian certificate. It is taking so long, and they are called at about 8 o'clock in the morning, and they are there, and then suddenly it comes to the surface that either the judge is not there, or they are busy, and they would be looked after some time. So I want to generate a discussion on this issue, that when so many reforms have been introduced, not only in the laws, in the procedures, and the betterment of the courts in terms of physical terms and training of the judges. So my question to the officers, judicial officers who are sitting here, attending this presentation, what do you think? What has changed over time through the reforms, and why, if the system has not changed, what is the resistance? What are the shortcomings, or what are the blocks which are not moving the system in the direction it should have gone until now? Because there was a lot of press coverage of all those reforms. So may I request the judicial officers, please share your opinion. Why, what do you think is the situation now? Has it improved from the previous years, or why so many delays? What do you think, or what is the main purpose of the judiciary? What is the main aim, or what in other terms we say vision and mission of judiciary? Because we are today talking about
self-management from the judicial officer's side, how to manage, how the court should manage, or the may manage in a better way, so that the ultimate purpose of judiciary is delivered. So please share your views without any restriction, whatever you want to say. I mean, I'm a police officer. I'm not saying that we are better off from others. We are not. Definitely, we are one of the most criticized institution in the country. But of course, they have upper hand, and they have a very, you can say, sacred mission to deliver justice to the society. So what is your vision? What do you think is the ultimate purpose of the course? It is about substantive justice, or it is procedural justice? What the courts are trying to achieve? जी मिस फरिया सनोबर, यू हैव रेज्ड हैंड, आप बात कर सकते हैं प्लीज। सर, द foremost थिंग, वो चाहे प्रोसीजर जस्टिस हो या सब्सटैंटिव हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी कोर्ट से हमारा जो चीज शुरू होती है वो हमारी कॉजलेस मैनेजमेंट होती है। अगर उस चीज में हमारी गिरफ्त आ जाती है, हमें पता होता है कि हमारे आज कोर्ट में किस तरह के केसेस हैं और उनकी कॉज लिस्ट के बाद उनकी सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए कि कौन से केस को किस वक्त पिकअप किया जाना है, ताकि पार्टीज को भी पता हो, लिटिगेंट्स को भी पता हो, वकीलों को पता हो, सबको पता हो, तो उससे इजी होता है। और एक चीज जो मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं खुद भी करती हूँ कि केसेस को एक दिन पहले स्टडी कर लिया जाए, तो उसको अगले दिन मतलब समझने में और केसेस जब हम पिकअप करते हैं उस वक्त बहुत सी आसानियां हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। Very valid points. I appreciate them. Any other member? आप तो ये कह देते हैं ना कि ये सब जो है वो जुडिशल ऑफिसर्स या जुडिशरी की तरफ से डिले है, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं करते हैं कि खाली जुडिशल ऑफिसर अलोन कुछ नहीं करता। उसका जो दूसरा पिलर है मेन, वो है एडवोकेट हजरात, हमारे वकला हजरात जो हमारे पास केस को प्रेजेंट करते हैं। अगर वो टाइम नहीं देंगे, वो असिस्टेंस नहीं देंगे, वो चलाने के लिए रेडी नहीं होंगे, और दूसरी तरफ फर्स्ट डे को हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने अपने केस की ही मिसाल दे दी कि जनाब 7 साल के बाद मैंने केस अपना रिटायरमेंट होने के 2-4 साल बाद मैंने सीपी दाखिल की, जो कि 7 साल चलने के बाद डिसमिस कर दी गई और मुझे सुना भी नहीं। एक तरफ तो 7 साल आपको सुनने के बावजूद भी अगर वो डिसमिस होती है आप कहते हैं सुना नहीं, और दूसरी तरफ अगर हम लोअर कोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे वकला आते नहीं हैं, टाइम देते नहीं हैं। अगर उनकी एब्सेंस में उनके कंटेंशन को देख के ही आर्डर किया जाए तो वो कहते हैं कि लॉ के हिसाब से नहीं है। तो ये सोल जुडिशल ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल ठहराना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा जब तक हम दूसरे पिलर को न देखें और उनको हम ऑन बोर्ड न लें। बस इतना सी बात है। Thank you. Whatever you have said is definitely relevant, but I am not saying, and even nobody else is saying, that it is the sole responsibility of the judicial officers, because we are part of a system. We are one portion of a system which we can call either the justice system or the criminal justice system, in which police is also included as institution. So definitely all of them have a certain role to play, but the ultimate decision judgment is to be given by the court. And these are the issues, definitely coordination issues. For example, with the lawyers, they are, you can say, a very major component of the system. So uh, unless they cooperate and coordinate with the court, definitely there are going to be difficulties. And that is the subject of today's talk, that how can we manage ourselves in a way. The topic is understanding self-management. How can we manage the courts in a better way? How can we
in the court, even judicial officers, they are included. And how can we even coordinate with the other stakeholders? So that is the real question, and you are definitely dot on once you said that we are not alone. And I'm not saying that it is the responsibility of the court. We are just trying to understand what are the restrictions, what are the limitations, why there is so much of, you can say, delay, or there are other problems which are main issues with either whether it is a criminal justice system or it is about the civil cases. So after understanding the situation, we will go towards its solutions and how the courts they can manage themselves in a better way, so that the justice is delivered, the ultimate purpose of the court is delivered to the masses. So is there any other comment? Okay, if there is no other comment, let me ask uh, another question. That is, as a judicial officers, what do you think is the ultimate purpose of you being a judge, or you being a part of the justice system? Either you're working on the civil side or on the criminal side. What is the ultimate product, or what is the ultimate service you are providing to the society? What is your main aim? Is it just clearance of the cases at a faster speed, or it is something else too? सर केसेस को फास्ट ट्रैक पे रखना भी जरूरी है। बस सिर्फ इशू ये आता है कि हमें बस अपनी कॉस्ट लिस्ट को मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और वकीलों के वो कहीं उनकी एंगेजमेंट्स वगैरह होती है इसको। हाँ, फास्ट ट्रैक केस को रखने का एक सिर्फ थोड़ा सा इशू ये होता है कि हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि केसेस को यकीन वकीलों के साथ साथ हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो सिर्फ उसमें ये होता है कि अगर एक जज एक केस को फास्ट ट्रैक पे चला रहा है, तो वो उसको चाहिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करे, 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करे, केसेस को थोड़ा ज्यादा पढ़ ले, तो उससे वो तो एक दिन वो प्रोएक्टिव हो जाएगा, तो केसेस के ऊपर कमांड आ जाएगा उसको। और अगर उसको लॉ का ग्रिप है कि उसे पता है कि किस जगह पर मुझे अपना कौन सा पावर इस्तेमाल करना है, तो ही कैन। Definitely, your views are very valid, and I understand them. And if they have read the file in advance, and they have, understood the minor points in the case, it will take less time for them to decide in the court. And uh, I'm not saying that they don't work hard, or they don't have time. Maybe these are the issues which you can understand better. But public is concerned about the time delays, and definitely about the justice, delivery of justice itself. So our purpose is how to look at our own system and try to understand the weaknesses, and then come up with some solutions which can improve the situation in justice delivery. Any other comment? I would request the judicial officers to please be proactive and share your ideas. There is nobody going to sanction us for just discussing the things for improvements. Are all of these civil judges and senior civil judges, or there are some additional session judges as well in the participants? These are senior civil judges and civil judges, sir. Okay, good. So they have certain years of experience, of, especially about maybe about 10 years or 15 years, especially if they are senior civil judges. So at this stage, we have our own understanding, and we know the system in and out. So if you can enlighten us on your views, perhaps we will, all of us, benefit, and
go out of this class with a mature mind. The learning outcomes are the purpose of this presentation. Sharing this idea, these ideas are that at the end of this session, the participants will be able to understand concepts and skills of self-management and practice self-management in their career as a judge. When we say self-management, the presumption or assumption here is that other systems are what they are, but we have to find the room for improvement in our system. How can we, as judges, contribute in the betterment of different aspects of delivery of justice, its speediness, and its correctness as well. So these are the learning outcomes today. We want to understand the hurdles, and we want to understand the basic concepts of time management and basic concepts of goal setting and how to achieve those goals. And some of the important concepts are self-management. Self-management is the ability to prioritize goals. First, we should know the goals, decide what must be done. It means we should have a strategy, a work plan in our mind, and be accountable to complete the necessary actions. That what actions are to be taken, we have to take those actions and should consider ourselves as responsible for taking those actions. So first of all, our main aim is make a list of our goals while we are sitting in the court or running the court as judges. What are our goals, and what is the most important one? And we should, arrange them in order of priority. So may I request the judicial officers, please make your list of the goals of the court where you sit, and what is the most important one, and then in terms of order of you can say importance, arrange them in terms of their importance, and then we will share that list and come to know what are the goals or the ultimate purpose of your working as a judge, and what is important for you and what is slightly less important, and in order of urgency, you can say. So what do you think are the goals of the courts? Sir, definitely the goal of the court must be to provide justice to the people. The foremost goal of the court must be this one. Provision of justice. That's great. Any other goal while you are sitting in the court? So there is a comment in chat box. It's justice followed by expeditious disposal by Justice Visovia. and disposal. Great. Anything else? Any other addition? So I think facilitation to people who come to the court is also a goal of people must be facilitated. They must be given whatever the case may be. It's very important point, and most of you can say the bickering about courts are about this facilitation. Uh, we all are part of the system, and we understand how the parties are treated and how the aggrieved people they are treated in the courts, in the police stations, and even in the other parts of the criminal justice system. And it is not very admirable, whatever treatment we give to them. So it is very important that we should give them justice, we should treat them well, and we should provide all these things within a reasonable amount of time, not over an extended period of time for many reasons. So all these 3 points are very important. So it is about time, and it is about justice,
and it is about fair treatment in the court. So, yes, Miss Friha. Sir, the most important thing what I consider is that कि हम वकीलों को सुनते हैं. At least we should give a hearing for even some minutes, okay, to the parties. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम समझ रहे होते हैं कि केस को समझे, लेकिन उनकी कुछ चीजें जो प्लीडिंग में भी नहीं आई होती, तो सुनना उनकी जरूरी है. उनकी मेन ग्रीवियंसेस क्या होती हैं, हो सकता है जो हमें वो बता, जो वकील ना बता पा रहा हो, कभी कभी वो बता देते हैं. और उसके बाद मैं समझती हूँ कि एटलीस्ट हमें पूरी फाइल को, एटलीस्ट दोनों पार्टीज की प्लीडिंग को केस से पहले एक दफा भले यूं ही कर से ली, लेकिन पढ़ लेना चाहिए. Ma'am, you are exactly right. I mean, the case as it is presented in the court, it is what we call cut and dried in a certain direction. But the actual thing remains hidden because the way law requires is different, and the actual events which took place either in a criminal activity or in a civil suit, those are different. If you can hear them or want to know some of the basic things, then you are able to understand it better maybe, instead of just hearing the lawyers of the parties. But is there any provision in the law which can then you can cross-examine them? Yes, sir. राइट, एक कमेंट और है उम्मे फरवा का, एंड शी सेइंग पेशेंस हियरिंग एंड स्पीडी ट्रायल. Patient hearing and speedy trial. That's great. सर मेरे हिसाब से हमें फाइल्स को भी देखना चाहिए, वकीलों को भी सुनना चाहिए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें पेशेंटली लिटिगेंट्स को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए और दोनों को साथ खड़ा करके सुनना चाहिए. क्योंकि जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है कि जो केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस, मैं अभी क्रिमिनल केसेस को, इंजरी मैटर्स को डील कर रही हूँ एज अ मॉडल कोर्ट जज. तो मेरे पास ऐसे मैटर्स आते हैं जो कि उनका जो रियल प्रॉब्लम होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट या तो बच्चों पे लड़ते होते हैं पड़ोसी, या तो घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं उससे वो लोग प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम होता है, जो इशू होता है प्रॉपर्टी शेयर, उस पे उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं. तो हम अगर उनको पेशेंटली सुनते हैं और समझाते हैं, क्योंकि उनका जो अगर बेसिक प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होता है, हम उनको ये बताते हैं, समझाते हैं कि अगर आपका ये जो मसला घर का मसला है, प्रॉपर्टी का मसला है, या पड़ोस में आप बच्चों पे लड़ रहे होते हैं, जब तक आपका ये बेसिक इशू अगर हल नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों के ये केसेस एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा. और सर ऐसे तकरीबन मैंने बहुत सारे केसेस डील किए हैं जिनके पहले से कुछ मैटर्स ऑलरेडी उनके बीच में डिसाइड हो चुके होते हैं, फिर दोबारा एक और एफआईआर और ऐसे ही काउंटर एफआईआर्स भी उनके एक दूसरे के अगेंस्ट केसेस लॉन्च होते रहते हैं. तो इसलिए पेशेंटली लिटिगेंट्स को सुनना भी हमारी ड्यूटी में शामिल है कि आखिर उनका जो रियल प्रॉब्लम है वो है क्या. हमें पेपर वर्क करने के बजाय इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए. Ma'am, you have a very solid point. Uh, I I was in the United States. I worked in Canada too, and I have attended courts. One very advantageous a part of the system in those countries is a conflict resolution, even in the court. At every step of the case, either it is a criminal case or civil case, they systematic opportunity that is in their system that if both the parties they want to make some sort of compromise, come to some solution of the issue so that the thing is resolved forever, instead of ultimately going to punishment or a decision of a civil suit which may lead to other litigations. So they want to reduce the litigation because it is very, very expensive there. It is also time taking and it has other hazards attached with it, just like more feuds and more conflicts. So I don't think we have this sort of system that at every major stage of the case, the courts
the courts there, they ask whether they want to go for some sort of negotiation, and those negotiations are arranged by the government, by the state, and those are mediated by a mediator. So, is there is any legal provision in Pakistan too about this system, uh, either in the criminal justice system or the civil system? If you know of it, or if you can, I mean, I mean, how can we arrange it? How can we bring a provision in the law where we ask people, for example, at जब जब फर्द जुर्म लगती है उस वक्त उनसे पूछ लें कि जी ठीक है, आपकी लड़ाई हुई, आपका सारा कुछ अभी आपको साल हो गया है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आपको कोई कंपनसेशन दे दें जो अग्रेसर है, या कोई और एग्रीमेंट कर ले तो उस पे आप जो हैं ताकि फर्दर लड़ाइयाँ ना हो और कोर्ट की लिटिगेशन जो है वो कम हो। सर ये सिविल प्रोसीजर कोड में है प्रोविजन इसका, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और दूसरी बात सर, हम काउंसलिंग कर सकते हैं, इसकी तो हमें परमिशन है, काउंसलिंग कर सकते हैं, पार्टीज को समझा सकते हैं, और मैं खुद भी करती हूँ। और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस जो हैं पार्टीज के, जो ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे मैंने इश्यू रिजॉल्व भी किए हैं, और लोगों के कंप्रोमाइजेस भी होते हैं इन चीजों पे, और उनके जो मसाइल है वो हल हो जाते हैं। और कुछ लोग तो मतलब इससे बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं कि हमें जज ने सुना भी सही, हमें समझाया भी सही, और लास्ट में ये कह के जाते हैं कि आपके जो अल्फाज है उनसे हमने ये चीज सीखी, और हम बिल्कुल अपना मसला जो है, अपना जो बेसिक मसला है वो हल करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम लोगों को जजेस अगर सुनेंगे, उनको थोड़ी बहुत एक्सेस देंगे, बजाय क्योंकि कुछ हमारे पास रवैये जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि जज को अगर थोड़ा अपना रवैया नरम और लोगों को समझने का मतलब वो एक मौका देना चाहिए, तो इससे लोग अपने मसाइल जो है वो बता भी सकते हैं और सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तो ये जो चीज है ये हमें करनी चाहिए। Yeah, that's great, madam. I appreciate you for your proactive sort of dispute resolution in the court, even if it is not provided in the law or in the procedure. Definitely, you can suggest this to your own system, and maybe at some stage this system is established. I personally believe, I have read the restorative justice system. I have written my master's thesis on that, and that is very free and simple procedure of reducing crime without sending people to the courts and ultimately to the jails, without punishment, without so much of expenses on policing. That system works better, and it reduces crime, it reduces repeat offenders. So I believe that this sort of interventions, they can be introduced, and we can go for some sort of dispute resolution in the court, because there are so many cases which are of very minor nature, and there is not very hard sort of enmity between people. जब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और एक सिविल जस्टिस सिस्टम है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक लेजिस्लेशन है जिसका नाम है स्मॉल क्लेम एंड माइनर ऑफेंसेस ऑर्डिनेंस। हमारे कुछ जज साहिबान के पास उसकी जुरिडिक्शन होगी, स्मॉल क्लेम एंड माइनर ऑफेंसेस ऑर्डिनेंस। उसके तहत मेडिएशन, फॉर्मली मेडिएशन लॉ का पार्ट है, क्रिमिनल केसेस में भी और सिविल केसेस के अंदर भी की जा सकती है। हाँ, वहाँ पे शर्त कुछ ये रखी हुई है कि ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल अप टू 3 years विच मे बी मेडिएटेड। और इसी तरीके से सिविल जुरिडिक्शन के अंदर उसी लॉ के अंदर जहाँ 1 लाख रुपए तक का डिस्प्यूट होता है उसको वहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त सेल्फ मैनेजमेंट की, तो एक सवाल स्पीकर साहब ने पूछा था, मैं अपने साथियों से मुखातिब हूँ, और पूछा था कि क्या लॉ में ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि जज भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले या सवाल कर ले, दूसरे लफ्ज़ों में
किसी भी किस्म का सवाल कर ले। तो आप लोग क्या समझते हैं कि क्या कोई है ऐसा एक मैकेनिज़्म? हम अभी मैं स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि सिविल जस्टिस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें कोई ऐसी स्पेस है कि जज ऐसा कर सकता है? क्योंकि जैसे सबा कह रही थी कि अगर मैं इंटरवीन करती हूँ, बात करती हूँ और मसले को रिजॉल्व करवा लेती हूँ और एक एडवांटेज हो जाता है फरीकैन के ऊपर भी एक ट्रस्ट हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर बढ़ता है। तो क्या हमारा कोई प्रोविजन ऑफ लॉ भी ऐसा है आप समझते हैं जिसे हम अपना पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बनाएं और कोई आदमी दूसरा तनकीद भी ना कर सके कि ये जज साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं? सर, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हमारी सिविल प्रोसीजर कोड का एक हिस्सा है, जिसमें हम पार्टीज को दोनों को सुन सकते हैं इन व्यू ऑफ द प्लीडिंग, द इंस्टांसेस क्या है, एंड देन वी गो अच्छा, फॉर बस फ्रेमिंग द मैं भी यही बताना चाह रहा था कि हम अगर इंटरनली सिविल मैटर्स में मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग प्लीडिंग्स वन कैन इंटरवीन, और हमारा वो जो एग्जामिनेशन ऑफ ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज है और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने का जो एक प्रोविजन है ऑर्डर 13 में 12-13 के अंदर, वो हमारी इस मैनेजमेंट, वो अगर हमारी वो मैनेजमेंट अगर हम कर लें तो हमारे हो सकता है कि अगर 4 इशू हैं तो हो सकता है वो 3 इशू में कन्वर्ट हो जाए, और इसी तरीके से क्वांटम ऑफ एविडेंस जो आना था वो यकीनन कम हो जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसी स्टेज पर हम गुफ्तगू करते वक्त सवाल जवाब जब हम ओरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहीं पे हम केस को और पार्टीज को इस तरह मैनेज कर लें कि वो आगे इश्यूज की तरफ जा ही नहीं। वो हो सकता है एडीआर सेक्शन 89A की तरफ चले जाए, और हो सकता है कि आपकी बात में इतनी इफेक्टिवनेस हो कि they immediately agree to resolve their dispute, because when you are examining witnesses, you are asking them to produce original documents, then one of the party will be exposed and they will be having an idea that the judge has some assessment about his case, तो वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की तरफ आ सकते हैं। तो वो मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, और ये हम अगर इसको रखें इस उस ऑर्डर 10, 11, 12, 13 को अगर हम अपने प्रैक्टिस में लेके आए तो बड़ा अच्छा हमें फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, जहाँ तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात है तो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस जो बच्चों के हवाले से लॉ है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, उसके अंदर सेक्शन 10 है उस एक्ट का जो बात करता है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के हवाले से, जहां मेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि फरीकैन जाएं और आपस में बैठें और बैठ के कुछ भी तय करके आ जाएं। और तो वो भी एक ऑल्टरनेट एक है, यानी ट्रायल की ज़रूरत नहीं है और उसमें चले जाएं। तो सिस्टम में legislative point of view say we do have too much space, but the issue is sometime we follow the process which is normally followed in the court, ठीक है ना। तो जो नई legislations आ रही हैं उसमें जो प्रोसीजर्स नए अडॉप्ट किए हुए हैं उनको उनकी तरफ हम जरा जाते नहीं हैं। अगर हम उनकी तरफ चले जाएं तो हम शायद अपने केस की, अपनी कॉज लिस्ट की मैनेजमेंट, अपनी कोर्ट की मैनेजमेंट में शायद कुछ इफेक्टिवनेस आ जाए और मामला बेहतर हो जाए। Thank you very much, sir, for supporting me on this point and taking it further. And I'm glad to know that the provisions of law exist, and the only issue is that we are not emphasizing or not taking advantage of those provisions. I was in Canada, and I talked to prosecutors, and they told me that only 5% of the cases, criminal cases, ultimately end up in court for prosecution. 95% of the cases are dropped in between, but after, I mean, discussion with the prosecutor and the other parties, because they don't want to spend so much of money on their system, because it is very expensive there for everybody, even for the government. And it is just, for example, they provide an incentive to an accused that if they can give some information, important information about other criminal accomplices or their friends, then there will be some sort of you can say soft behavior on the part of the prosecution.
So such like incentives that reduces their burdens on the court. So why not we, when once we have those provisions, and if there is some sort of, you can say, problem, or those are not strong enough to be used, we can make recommendations to the Ministry of Law that to reduce burden on the court and even litigation in the society. हमें ये चीज़ें जो हैं इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. अगर ये पॉसिबल हो तो I am from a village. I understand that such like small things, they ultimately lead to bigger crimes, especially property crimes, and even crime against person, murders took place. Just कि वो इज्जत बेइज्जती का मसला बन जाता है. तो अगर हम इस तरफ आ जाएं तो हमारी सोसाइटी में एक किस्म की हार्मनी क्रिएट होने का इम्कान बनता है, और कोर्ट्स पे प्रेशर जो है, और जिसे हम कहते हैं एक courts are there to follow a procedure, and mostly they go for procedural justice. बट जो पब्लिक को चाहिए वो है सब्सटेंटिव जस्टिस, कि अगर किसी के साथ ज्यादती है तो उसको मिटिगेट किया जाए. तो उस तरीके से हम जो है उस तरफ जा सकते हैं, सब्सटेंटिव जस्टिस की तरफ भी. So our topic today is self-management on the part of the courts, and all those points which we have discussed up till now, those were very relevant, and even I think this discussion was very productive and positive. Next slide, please. मैं एक चीज़ का इजाफा अगर करूं, जैसा अभी आपने कहा कि substantial justice. So sometime I feel that we judges most of the time emphasize on the procedural laws, and we talk about the law, we talk about the case law, and we sometimes ignore the concept of justice and concept of substantial justice. Every law is meant to achieve that just concept of justice. So we need to, while we are deciding, while we are interpreting a particular law, so we need to understand and we need to know the ultimate objective of introducing a legislation, and that is to कि कोई इंसाफ मिलने की तरफ जाए. तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत सारे जजमेंट में ये कह चुका है कि जो प्रोसीजरल या टेक्निकलिटीज़ हैं इनको किसी हद तक दूर किया जाए, इग्नोर किया जाए रादर, और हम सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जाएं. और जब हम सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जाएंगे तो जो पब्लिक की परसेप्शन है जुडिशल सिस्टम पे, लीगल सिस्टम के ऊपर, वो करेक्ट होना शुरू होंगी. ये तो हमारी इंटरप्रिटेशन है ना, कि हम किस तरीके से इंटरप्रेट करें. वो तो सबसे पहला इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट था कि लिटरेरी इंटरप्रिटेशन. ये पहला इंटरप्रिटेशन का रूल था, कैनन था, विजडम थी, कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो. फिर सब्सिक्वेंटली दूसरी इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए, और उन सब का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि हम चीज़ों को इस तरह इंटरप्रेट करें कि हम अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन की तरफ जाए, और सोसाइटी जो है उसमें इंसाफ कहीं हासिल होता हुआ नज़र आए. अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि लॉ के अंदर तो लिखा हुआ है कि फीस जो है वो 0.05 पैसा होगी पर पेज सर्टिफाइड कॉपी की. तो लॉ तो वो अभी भी वही बना हुआ है. हम चार्ज कर रहे हैं 5 रुपए, हम चार्ज कर रहे हैं 10 रुपए. तो एक तरह से वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द लॉ. लेकिन वो ये था कि हमने लोगों की आसानी की तरफ गए कि वो कंप्यूटर के ऊपर अब टाइप हो जाता है, फोटोकॉपी की मशीन का कॉन्सेप्ट आ गया है. तो अपनी चीज़ों को हमने थोड़ा सा बेहतर किया है. तो कहीं पे हम कोशिश करते हैं कि लेजिस्लेटिव चेंजेस ले आएँ, लेकिन क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो फिर हम उसे कुछ जनरल कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के ज़रिए कहीं और अप्लाई करते हैं और उसे कर लेते हैं. अब मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर है, जावेद साहब की कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पे एक और भी बहुत सारी कोर्ट्स हैं जिसके अंदर एक वन विंडो का कॉन्सेप्ट कुछ इंट्रोड्यूस कराया है. तो किसी सेक्शन में नहीं लिखा कि वन विंडो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर स्टैब्लिश होगी, बट द जज while managing
his affairs, his district affairs, वो administrative affairs भी थे, वो judicial affairs भी थे. He decided to set up ये जो क्या कहेंगे जो बनाई है वन विंडो बनाई है या जो इंफॉर्मेशन डेस्क बनाई है वो बनाई है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाता है. तो जो ये बनी है इस किस्म की जो बनी है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एक शख्स ने इस्तेमाल करते हुए और बहुत सारे लोगों के लिए आसानी पैदा की है. और कोई सिमिलर अप्रोच हमें भी इंडिविजुअल अपनी कोर्ट में भी कहीं अडॉप्ट करने की ज़रूरत है. Okay, thank you very much. So, what we have learned up till now through our discussion, I would like to summarize it. That the ultimate purpose of the course is to provide substantive justice to the society, to the aggrieved persons, and even to the accused. And definitely for that there are some procedures to protect their rights of presenting their point of view in a legal manner. And it was very informative from the side of Honorable Justice Shahid Shafiq Sahib, that there are some laws which exist in our system too, which instead of just going for the regular procedures, I mean through criminal justice courts or through civil courts, going for the full procedure, there are some provisions where we can go for conflict resolution sort of thing, where parties, they benefit, the state benefits, and the ultimate outcome is better, and it may reduce the court's burden too. So I believe that to implement this approach, it will be very, very beneficial, and the courts officer, they can try at their own, and even through some permission or with the knowledge of the higher ups, for example, Chief Justice High Court, Sindh High Court, or whatever your authority is. There is no harm in discussing these issues and trying to implement some of the innovations which are permissible under the law. And those are definitely preferable. And once we are going for self-management with the presumption that there are some issues with our system and we want to improve them, and there are different approaches of improving this service delivery, or you can say justice delivery. And the first approach is we must understand our goals, where we want to reach and what we want to deliver. And goal setting is very important. And goal setting involves the development of an action plan designed to motivate and guide a person or group towards a goal. So if we look at the judicial officers, what do you think is the best way to identify our goals, ultimate goals, and what are the different approaches or the methods or steps which we can take to achieve those goals? So that is my question to the officers who are running the course. What do you think? We have determined our goal, we have defined them in the law, and even during this talk, we have suggested or we agree that some innovations are possible, improvements are possible. So what are the different steps? What are the different actions we can initiate, we can suggest, or we can implement at our own initiative? So please contribute to the discussion.
So goal setting involves the development of an action plan designed to motivate and guide a person or group towards a goal. Our goal is to provide justice to the litigants in both the fields. And what do you think are the steps with which we can implement our action plan? Sir, I think first goal for setting up delivery of justice in the court must be human resources, management of the human resources. If we manage properly human resources, we can achieve every goal we set. What goal are to be set while I'm working as judicial magistrate, while I'm working as civil judge? Goal must be to achieve, to deliver the justice. Every court's goal must be to to be the delivery of the justice. And to achieve this, we should manage the human resources first. So what do you mean by human resources? Managing of human resources. Human resources include the person of the judges, then the staff working with them. Those are the human resources of a court. So what do you mean by managing them? It is about training. It is about pay package. It is about some other thing, motivation, some sort of thing. So how do you think, what are the different goals? What are the steps we can take? We can take, for example, should we increase their pay or send them on training, or what are different steps in your mind? अच्छा, जैसे हम जजेस जब कोर्ट में अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई एवरीवन शुड कम ऑन टाइम एंड लीव ऑन टाइम, और everyone should complete his work, whatever he has been assigned he should complete it. एक जैसे ये हो गया, और हम एक प्लान करते हैं, हमारा एक गोल होता है कि at the end of the month we have to achieve this much of यूनिट का कोई टारगेट हमने जो रखा हुआ है, केसेस का क्वांटम का टारगेट रखा हुआ है कि ये हमारा गोल है कि हमने इस महीने के आखिर में ये अचीव करना है। तो एक तो गोल हमें ये नज़र आ रहा है, मतलब अच्छा, अब इस गोल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गोल तो गुज़िश्ता 25 साल से 50 साल से ये गोल है कि 100 यूनिट बनाने हैं और 200 यूनिट बनाने हैं, और हम उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब लेकिन इस अचीवमेंट से जो सेटिस्फेक्शन है लिटिगेंट का, वो कहीं मिलता हुआ हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा हम क्या गोल सेट करें? यानी टारगेट 100 केस डिस्पोज ऑफ करना तो रहा नहीं, उससे तो लोगों की सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही है। हम ऐसा क्या सोचें कि ये लोग जिनके लिए हम पैदा हुए हैं ये मुतमईन कुछ हो जाए और कुछ इनकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाए। वो कोई हमें गोल सेट करने की और हमें सोचने की ज़रूरत है कि 8 बजे आपने कंपेल किया समवन, जो स्टाफ है सारे ह्यूमन रिसोर्स वक्त पे आ जाए, वो आ गए, तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ गई है। 3 बजे चले जाओ, 3 बजे चले गए, कोई 2 बजे नहीं गया है। लेकिन हम देख रहे हैं ये सब कुछ तो हमने किया, इससे तो लेकिन नताइज तो कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे। तो हम ऐसा क्या, इसका मतलब है कि क्या हमारी मैनेजमेंट सही नहीं है? हमारी इंटरनल मैनेजमेंट जो है, हमारी इंडिविजुअल कोर्स की मैनेजमेंट सही नहीं है, हमारी एज ए होल डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट सही नहीं है, हमारे कहाँ कहीं पे लैग करता है, हम कहाँ कहीं कुछ कम करते हैं, हमें कुछ वो सोचने की ज़रूरत है। हम किस आदमी को अहमियत दे रहे हैं, किस आदमी को अहमियत नहीं दे रहे। मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट जज मैं महसूस ये करता हूँ कि सारी की सारी अहमियत मुझे मिल रही होती है कि एवरी जज इज़ मेकिंग अटेम्प्ट टू प्लीज़ मी। तो अब जब वो मुझे प्लीज़ कर रहा है, मैं तो मुझे तो प्लीज़ ना करे, वो तो लिटिगेंट्स को प्लीज़ कर दे, और लिटिगेंट्स को प्लीज़ करने का क्या तरीका कार है, वो हमें कहीं सोचने की ज़रूरत है। और हमने हमारा अल्टीमेट गोल जो होना चाहिए कहीं वो होना चाहिए। हमने कभी महसूस किया कि वो सुबह 8:30 बजे 20 आदमी आ गए हैं, वो 20 आदमी कहाँ बैठेंगे? वो जिसको जिसको हम काम पे जिसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम 12 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसे हमने 9 बजे क्यों बुला लिया है? जो वो बैठने की उसके पास जगह है या नहीं है? क्या ये हमारा उसकी सेटिस्फेक्शन तो ये होगा ना कि वो
कहीं पे आए तो बैठ जाए, मुनासिब जगह पे आए और आने के बाद उसका जल्दी से सुनवाई हो जाए। वो अगर सर्टिफाइड कॉपी लेना चाहता है तो जल्दी से सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए। कहीं वो कोई एप्लीकेशन मूव करना चाहता है तो टाइमली उसकी एप्लीकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ हो कि पहुंच जाए। तो कहीं हमें कुछ सोचने की वैसे ज़रूरत है कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है वर्किंग का, एग्जिस्टिंग मैनेजेरियल या मैनेजमेंट है हमारी, दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। ये लिटिगेंट तो छोड़ें, हम पुलिस वाला जो गवाही के लिए आता है हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। हम एक प्लेंटिफ के साथ जो एक गवाह आता है वो हमसे अनसेटिस्फाइड जाता है। कभी कभी तो मुझे महसूस ऐसा होता है कि वन हु इन हुज फेवर वी आर डिसाइडिंग अ केस, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। वो कहता है जुम्मे को रिलीफ मांगा था और 2 महीने बाद जुम्मे को मिला तो वो क्या फ़ायदा, और 2 साल बाद मिला तो क्या फ़ायदा। तो कहीं लोगों की सेटिस्फेक्शन को हमने कहीं रियलाइज़ करने की कहीं ज़रूरत है, और उसके लिए हमें कहीं हमें प्लान करना है, अपने गोल सेट करने हैं कि सिर्फ केस ख़त्म नहीं करना, सवाल ये है कि केस कैसे ख़त्म करना है, उसके ऊपर हमें कहीं सोचने की ज़रूरत है। I am so happy that we are talking about and discussing the real issues, the crux of the matter. Uh, Once my colleagues they tell the purpose of the police is register a case, investigate, and maintain public order. I definitely say no. It is not the purpose of the police. Police is there to make our communities feel safe, secure, and reassured. That is the ultimate purpose of the police, and the other things are just different ways of achieving that purpose. And exactly that's what Justice Saab is saying about the purpose of the judiciary. It is not that we should have 100 units or 200 units per month. That is not the purpose. That is way of creating public satisfaction. But the ultimate satisfaction is once you produce harmony in the society, your justice leads to harmony, and there are less and less litigants in the society, and they don't feel urge to go to the courts. So then we would say that the courts are delivering justice to the common man. सर ये जो लिटिगेंट्स की जो आपने बात की, हर केस में 2 पार्टीज होती हैं। जज अगर कोई भी ऑर्डर करेगा वो जरूरी तो नहीं किसी दोनों की फेवर में होगा, एक की फेवर में होगा, एक के अगेंस्ट होगा। तो लिटिगेंट की सेटिस्फेक्शन तो ये पॉसिबल ही नहीं, जो मैं समझता हूँ। वो तो ऊपर चले जाएंगे अपील में हर ऑर्डर के खिलाफ। बाकी जो प्रोसीजरल मामला है, जैसे सर ने कहा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की बात है या कुछ और चीजें हैं, तो डेफिनेटली हमारी कोर्ट्स में ह्यूमन रिसोर्स की कितनी डेप्थ है वो सबको पता है। और दूसरा, जो हमारे सेशन जजेस है उनके पावर, उनके पास इंटीग्रेटेड पावर है, उनको डिसइंटीग्रेट करना चाहिए ना। एक जज को अपने बजट के ऊपर भी कोई मतलब वो नहीं होता कि मेरी कोर्ट का कितना बजट आता है वो मुझे मिलता है या नहीं मिलता। एक कोर्ट में कैपेसिटी होती है कि उसको स्टेनोग्राफर की जरूरत है, वो उसे नहीं मिलती, कॉपिस्ट उसके पास नहीं होता। ये सारी चीजें अब यहाँ पे एक गोल मैं सेट करने जा रहा हूँ। अब जज साहब सोचना शुरू करेंगे कि मैं सिविल जज हूँ या मैं सीनियर सिविल जज हूँ, और वो आइडेंटिफाई करेंगे अपनी कोर्ट के अंदर कि मुझे कितने नए आदमी चाहिए, मुझे कितना कागज़ चाहिए, मुझे कितनी कुर्सियाँ चाहिए, मुझे कितनी मेज़ चाहिए, मुझे कितना बजट एज ए होल चाहिए। और उनमें इतनी करज होगी कि वो एक सॉफ्ट सा लेटर अपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को लिखें कि सर बजट डेवलप, जब बजट प्रिपरेशन का टाइम आए तो एटलीस्ट दीज आर माई रिक्वायरमेंट and I have to achieve a certain goal, and for achieving those goals I need this much of resource, और उन रिसोर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे। अभी अनफॉर्चुनेट हमारे सिस्टम में क्या है कि एक सुपरिटेंडेंट वो पूरा बजट बनाता है, ना आपसे पूछता है ना डिस्ट्रिक्ट जज साहब से पूछता है, और बना के लेके आता है, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब और हम उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, सब कुछ ठीक है ना, सब अच्छा है ना, बढ़ा दिया? वो कहता है 5% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, और इन्फ्लेशन हो गया 15%। तो हमारी जो आपने
हमने कहीं ये सेट करना है कि मेरी जो नीड है ना, मैं उस नीड को कम्युनिकेट अपने बिग बॉस को या इमीडिएट बॉस को कैसे करूं, कहीं हमें उसको प्लान करना है। और जहां तक बात हुई कि दो फरीकैन, आप दो, वो फरीक जो जीता है, एक सादा सा फॉर्म बनाइए और ज़रा एक इंडिपेंडेंट आदमी से को कह दीजिए कि ये ज़रा फॉर्म तो भरवा लो जो जीता है, वो भी हमें अच्छा नहीं कहेगा। क्यों? वो इतने मसाइल कहेगा कि मैं इतनी दफ़ा आया, मेरा ऐसा हो गया, उस दिन इसलिए केस नहीं चला, उस दिन ऐसा हो गया, उस दिन ऐसा हो गया है, वो भी खुश नहीं है। अब आखिर हम इतने हमारे जो रैंकिंग है इतनी लो इसलिए हुई भी है कि हम सिर्फ अपने कमरे से निकलने को दिमाग में हमने एक सर्टेन एक सिचुएशन बना ली है और हम लिटिगेंट की सोच में दाखिल होने की कोशिश नहीं करते, उसके मसाइल को रियल सेंस में समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो देखें, हमें अगरचा जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा तो आज हम 10 ममालिक सिर्फ हमसे बेहतर हैं, है कहीं ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल आखिरी वाले नंबर पे चले जाएं। हमें अपनी अप्रोच को शायद दुरुस्त करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो दो फरीकैन का आपने बताया, आप किसी से पूछ लीजिए, वो जीतने वाला भी हमें अच्छा नहीं कहेगा, है वो कहेगा खुदा का शुक्र है कि मुझे कुछ मिल गया। आप अपने उस रिश्तेदार का इंटरव्यू कर लीजिए जिसका किसी कोर्ट में केस गया होगा, है उस रिश्तेदार से पूछ लीजिए, आप किसी पुलिस ऑफिसर से पूछ लीजिए, आप किसी भी शख्स से जिसका किसी तरीके से वास्ता पड़ा है उससे पूछ के देखिए ना, तो वो हमारे बारे में किस तरीके से गुफ्तगू करता है, अगर हम उसे लिबर्टी दें तो। जब लिबर्टी नहीं दें और कहें कि अगर खबरदार अगर कुछ आवाज़ निकाली तो तुझे जेल में डाल देंगे, फिर तो यकीनन वो नहीं बोलेगा। बट इफ़ यू आर गोइंग टू गिव सम लिबर्टी, देन ही विल एक्सप्रेस एंड ही विल शो हिज कंसर्न कि भाई I was treated like that and I was expecting कि भाई मुझे तो ऐसा हो जाएगा। तो हमें देखिए कुछ ना कुछ बेटा हमें सोचने की ज़रूरत है। सर मेरा ये कहना है कि जज अकेला भी क्या कर सकता है, आप खुद सोचे। विटनेसेस तो हमारे पास आते हैं बहुत सारे, और दूसरी ये बात, हम तो रेडी होते हैं चलाने को, 3 बजे तक बैठे हुए होते हैं ओपन कोर्ट्स में, 4 बजे तक 5 बजे तक हम तो कमिटेड होते हैं कि भाई विटनेस आए, बेचारा चल जाए तो अच्छा है, उसको ज्यादा डेट्स ना दी जाए। हमें खुद भी दुख होता है वापस भेजने को, पर आप खुद सोचे सर, वकील जो होते हैं, कभी किधर केस है मेरा, कभी किधर केस है, मैडम आज एक आया है, दूसरा चल जाएगा, इसका क्रॉस है, ये हो जाएगा, आज इसको मैंने चला रहा है, ये विटनेस नहीं आया, ये नहीं आया। सर एडजमेंट्स तो वकला की तरफ से भी मतलब बहुत सारी होती है ना, एक जज अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना स्पीडी ट्रायल में। मतलब ऐसा कि बार और बेंच दोनों का सारा कुछ होता है ना तरीकेकार। अब मैं खुद बैठी हुई होती हूँ कोर्ट में, चलने को तो बहुत सारे मेरे पास आते हैं केसेस क्रिमिनल के, पर किसी में कंप्लेनर नहीं आता तो कहते हैं मैडम हमारा क्रॉस ओपन हो जाएगा, मुशीर नहीं आया आज, मैडम आईओ को भला अगली डेट पे चला लेंगे, मैडम मेरे इस कोर्ट में केसेस है, मैडम मुझे बदीन जाना है, मैडम ये। तो हम उस वजह से भी हमें भी दुख होता है कि विटनेसेस वापस जा रहे हैं या लोगों को इंसाफ मुहैया नहीं होता, या क्रिमिनल केसेस में भी थोड़े ट्रायल में डिले हो जाते हैं। और सर इसमें सारी गलती हम जजेस की भी नहीं है ना, हम भी तो जितना कर सकते हैं हम खुद की सिर्फ मतलब जैसे होता है सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, पर इसमें ज्यादा रोल वकीलों का भी तो होना चाहिए ना, उनको भी देखना चाहिए कि हम लोग फीस ले रहे हैं और हमें भी केसेस चलाने चाहिए। मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं कि जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट्स होते हैं बेचारे देख रहे होते हैं, वकील कह रहे हैं मैडम बस एजेंट कर दें प्लीज, ये हो गया वो हो गया, और वो बेचारे कहते हैं मैडम हम 3 विटनेस लाए हैं, हमारा खर्च किराया, तो वकील खुद उनको कहते हैं हाँ हाँ बाहर चलो मैं आपको बताता हूँ, तो वो हमारे खिलाफ उनको बता देते होंगे कि आज मैडम का मूड सही नहीं है, आज जज साहब छोड़ दो, आज ये हो गया वो हो गया। तो उनकी भी थोड़ी गलती होती है, सिर्फ जज का नहीं है कि जज की वजह से लिटिगेंट्स को बेचारों को मतलब तकलीफ होती है, कुछ होता है, मेरा ये कहना है सर। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप ऐसा बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन हम देखें इस जुडिशल सिस्टम के अंदर जो जज है ना वो बड़ा की स्टेक होल्डर है, और पुलिस भी इसकी बात मान रही है, प्लेंटिफ भी इसकी बात मान रहा है, डिफेंडेंट भी इसकी बात मान रहा है, हर आदमी इसको अहमियत दे रहा है। तो जहाँ अहमियत दे रहा है तो मुझे कहीं अपनी मैनेजेरियल स्किल से कुछ सिस्टम को ऐसा करना है कि ये मुझे और ज़्यादा अहमियत दे दें और जिससे नताइज अच्छे निकल जाए। तो अपने आप को सरेंडर करने की बजाय हम कहीं ना कहीं कुछ हल्की सी एफर्ट्स करते जाएं। देखिए ना, मेरे हर सम्मन पे लिखा हुआ है 8:30 पे आ जाओ, किसका कसूर है ये?
हर सम्मन पे 8:30 पे मुझे बुलाया है। तो ये इसमें वकील का कसूर है कि जज का कसूर है कि क्लर्क का कसूर है, ये किसका कसूर किसका है? और वो 8:30 पे आके फिर वो 4 घंटे जो वो बेकार बैठा हुआ है, वो हमारे बारे में फिर जो एक सोचना शुरू कर देता है, और मुश्किल के अंदर इतने अच्छे हालात भी नहीं हैं। तो अच्छा देखिए ना, हम दूसरे ममालिक में भी तो यही सिस्टम है ना, वो वहाँ पे लोग ऐसा कुछ ना कुछ तो बेहतर है ना। तो कहीं जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने अपने आप को इतना बेबस और सरेंडर क्यों कर दिया है? जी स्पीकर साहब प्लीज। Yes, it's a very valid point that we are part of a system. Police is part of criminal justice system. The judges are, but definitely, as a part of the system, judges are the most important. They are just like engine of a car or of any vehicle. The car runs on the side where the engine goes. So other people, they have their importance. The lawyers, they are also officers of the court, but I mean, they don't have that much of power which a judge has. So because they have to, I mean, the lawyers, they have to speak before the judge, they have to argue, they also need their favor, maybe legally. So I mean, they can be managed. They have a role, but that is not so important as the judge's role is. Definitely, with your sport or with your own planning of the court, you can definitely improve the things. Just like it's, we can leave it as such. So because I mean, because of the other actors in the system, so we need to play our own part, and the other people, they have a part, but that is not so important. And another thing which we have already discussed, that is we need to have a different direction. The current direction of the justice system, maybe it needs improvement in terms of its objectives and goals. And we have discussed that it is not just, I mean, deciding the cases, number of cases. It is also about the real justice, substantive justice too. So we definitely need to play our role, and those are the objectives which we must strive for. And it is, I mean, with better management, we can definitely make improvement, and with better philosophy of justice as well. And then, can you please go to the previous, where goal setting was discussed? Previous slide. Yeah. Uh, the first thing is we should know our goals and set a priority order. What are our goals and what is our priority? I mean, which goal comes first? And goal setting involves the development of an action plan designed to motivate and guide a person, group towards a goal. And here we have decided the goals. The judges and the court officials, they must know the time management skills, the process of planning, exercising conscious control of time. Currently, how many of our officers who are sitting in the court, they have some plan for the day, time plan for the day. Okay, this much of time I'm going to read the files, and this much of time I'm going for listening of the urgent matters, for example, bail matters, and this much of time is left for the meetings with the seniors, and this much of time is for recording of evidence or announcement of judgments. How many of officers, they definitely go for some sort of planning of the day? Do we manage our time or leave it at the mercy of the extraneous circumstances? For example, कोई friend आ गया है या कोई lawyer आ गए हैं मिलने के लिए. Is there any meeting time for them? Reserve some time. That is a necessity that we should listen to them. But we can have a specific time. Instead of that, after every 10 minutes, somebody is sneaking in the room and looking for some favor. So is that we are free for all, or do we have
our own game plan too, which we don't want that people should interfere with that. My question is to the officers that how many of you have some sort of system of time management in the court? You have variety of commitments, and how do you cater for them separately? You know that half an hour or 1 hour is required for meeting the guests from the lawyer community, from some other source, and what is left for the emergency calls. So do you plan for the time? No, sir, there is no such thing in district judiciary. So far as और इसको जो है ना सर, ये encourage भी नहीं किया जाता. इवन जो जजेस होते हैं, सिविल जजेस या सीनियर सिविल जजेस, कहीं कहीं पे तो उसको सही भी समझा नहीं जाता कि आप वकीलों के साथ क्यों इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स वहां पे आ रहे हैं. तो मतलब ये सेशन जजेस के ऊपर भी है, और फिर ये प्लेस टू प्लेस, स्टेशन टू स्टेशन ये चीजें वेरी भी करती हैं. पर ऐसी कोई चीज हमारे मतलब सिस्टम में नहीं है कि हम किसी के साथ मिलेंगे या टी ब्रेक होगा, जजेस आपस में मिलेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएं वगैरह वगैरह, ये कुछ नहीं है सर. बाकी दोस्त इस पे कमेंट कर सकते हैं. अच्छा चलो, मैं अगर ये कहूँ कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है. फॉर इंस्टेंस के there is a notification which specifically state that the court sitting will be 8:30 to 11 बजे तक. 11 बजे से 11:30 तक टी होगा या ब्रेक होगा, फिर उसके बाद ये होगा है, तो कहीं इतने बजे तक कोर्ट का टाइमिंग होगा, फिर केस चलेगा. तो टू सम एक्सटेंट तो हमारे पास टाइम लिमिट तो है, टाइम मैनेजमेंट तो है. ठीक है, अब इस टाइम मैनेजमेंट में मैंने ये देखना है, मैं सिविल जज हूं, कि मैं कौन से टाइम स्लॉट फिक्स करता हूं जब मैं बेल एप्लीकेशन सुनूंगा, कौन सी टाइम स्लॉट रखता हूं जब मैं सिविल सूट उठाऊंगा, कौन से टाइम स्लॉट रखता हूं जब मैं एविडेंस रिकॉर्ड करूंगा, कब मैं कौन सा दिन मैं रखता हूं जब मैं आर्गुमेंट करूंगा, सुनूंगा, और मेन केस के अंदर कौन सा दिन है जब मैं जजमेंट करूंगा. तो मैंने अब टाइम को मैनेज करना शुरू किया. तो कहीं मैनेजमेंट मुझे कहीं तो लेके आनी है. फिर मैंने ये भी देखना है कि मैं एक केस की हियरिंग करने बैठा हूँ, एंड द एडवोकेट स्टार्टेड टू रीड ऑल एविडेंस. सो हाउ टू इंटरवीन, हाउ टू स्टॉप टू रीड दैट होल डॉक्यूमेंट विच कंसिस्ट, पूरी फाइल विच कंसिस्ट ऑफ 20 पेजेस. तो मैं उसको कैसे इंटरवीन करूं, मैं उसको कैसे एलोकेट करूं कि आपके पास आर्गुमेंट के लिए 30 मिनट्स का टाइम है, दूसरे फरीक तुम्हारे पास भी 30 मिनट्स का टाइम है. पूरी दुनिया के अंदर टाइम लिमिट पहले से जज साहब बता देते हैं फरीकैन को. कहीं हमें वो सेट करना पड़ेगा, हमें कहीं अपने वकील साहिबान को ये बताना पड़ेगा कि जब आप क्रिमिनल केस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, जब आप आर्गुमेंट करेंगे, तो आपने ये चीजें राइटिंग में देनी है और ये चीजें वर्बल बतानी है. तो कहीं तो हम सेट करें कहीं. तो वो टाइम मैनेजमेंट हमारी जुडिशियल वर्क के अंदर किस तरीके से टाइम को मैनेज करें. फिर मेरी कोर्ट है जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की बात आ रही है, उसकी मैनेजमेंट हो रही है, उस मैनेजमेंट को, उन ह्यूमन रिसोर्स को मैं कब गाइड करूं कि समन्स इस तरीके से इशू इतनी तारीख तक, इतने बजे तक हो जाने चाहिए, इतनी तारीख वाले इतने तक हो जाएंगे. मैं इस तरह चेक करूंगा. समन्स जो है वो एक दिन पहले आने चाहिए मेरे पास सर्विस वाले, और जो सम्मन जिस तारीख को इशू होगा उसके 3 दिन के अंदर अंदर उसकी सर्विस होनी चाहिए. वो आखिरी 3 दिन में पेश कर रहा है, लेके जा रहा है आखिरी 3 दिन के अंदर, और हम कह रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो. वो तो जब हमारी टाइम मैनेजमेंट तो रही नहीं, हमने तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल ही नहीं किया. प्रोसेस सर्वर 3 दिन जब बाकी होते हैं तो सर्विस करता है. हमें कहीं पे मैनेज करना है कि भाई तुम पहले उसे विद इन 3 डेज इश्योरेंस से, विद इन 3 डेज कहीं सर्विस करो, ताकि नेक्स्ट डेट पे रिटर्न स्टेटमेंट में आए. अगर वो लास्ट के 3 दिन में डेज के अंदर जाके सर्विस करेगा तो हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा, एडजॉर्नमेंट आएगी. एडजॉर्नमेंट आएगा तो लॉन्ग हो जाएगा, ट्रायल लॉन्ग हो जाएगा. तो हमें चीज़ों को, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे मेरी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सारी चीज़ें बढ़ने की तरफ जाएंगे.
और जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का ताल्लुक है, वो मुझ पर आ गई बात कि मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट जज अपने डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बढ़ाने में क्या अपना रोल अदा करता हूँ, वो फिर मेरे पार्ट पे आ जाएगा। लेकिन एक इंडिविजुअल भी कोई ना कोई रोल अदा कर सकता है। थैंक यू Justice Saab, for making the point that there are many instructions, there are many regulations and advice from the senior judiciary about managing your time, but it is a sort of habit, or we are not keeping up or following those instructions. And it is not, I mean, uh, uh, it is not like that we can't have our own effect. We can say even no to some, in certain circumstances. I know that it is considered as something, a bad habit to meet the lawyers in the court in your retiring room. It's not generally appreciated. But nowadays, people definitely meet their friends. They also, visit them, and there is serving of tea, etc., and exchange of pleasantries. Those things are reality of our system. But definitely, with some management of time, you can give them time to in a safe way. There is no allegation on you. If you have a system, make a system. Don't leave it to the circumstances, because we all know that even if somebody comes for 2 minutes, that wastes your 5-10 minutes, because then you have to set your mind to your work again. So why not keep some time for such like interferences? So time management is very important, and it is the process of planning, exercising conscious control of your time. It is not that naturally, for example, I am a retired officer, people know that he must be in his house or somewhere. So people keep on coming. Okay, he doesn't have anything else to do. Let's go to him for a tea. That wastes my time and energy and resources. Why not I tell my friends or the acquaintances who visit me, okay, this is the time to meet me. So such like understandings can be created, which save our time, and which makes us more productive. And that is even possible in this judicial system too, and even in the other government offices. And the process of planning and exercising conscious control, that's very important word. We should know that at this time we would be looking at this aspect of our judicial work. And this time would be reserved for announcement of, for example, judgments, or this is time for writing of judgments. So once people know that you have this time reserved, definitely they would avoid to disturb you, and you would be able to do your work with the peace of mind. And the next point is organizational skills. Generally, we understand that organizational skills are meant for managers, or in the civil bureaucracy, or in the what we call private sector, in the business sector. That is their topic. But organizational skills are required for the judicial officers as well, because they are supervising so many human resources, not only the judges and the lower staff too. So that is very important to know about organizational skills that allow you to use your resources efficiently and effectively. There must be efficient use, and there must be effective use. Being organized means you use your time, energy, and workplace well to achieve your assigned tasks of deciding the cases in a very, very fair and legal manner. There is importance of key self-management skills. For self-management is the process of preparing the
preparing for the future in a result-oriented manner. Because even here in the judiciary, judiciary is result-oriented, and that result orientation is about those units, number of cases decided based on the individual value of a case. For example, if it is a minor case, how many number you would get, and if it is a major case, how many number you will get. So primarily we are focused on those numbers. So and we can definitely, even if that is our objective, even then management is the process through which we can achieve our objectives. But if we change our objective towards the public satisfaction or to the fairness and justice in the real sense, not just in procedures, even then there is a process required for that. It helps us to take change your current scenario, set goals, and execute important tasks in a timely fashion, so you achieve your objectives. So there are some discussion questions. Uh, Looking at, although we have some hints about uh, the topic we would be discussing today, uh, I mean, being in the system as part of justice system, how empowered you are to manage yourself and your tasks, how independent you are, or how independent you are to spend your time. Is there any restriction? Is there some system under which you can work, or you are free to spend your time as you desire? And how easy or difficult is managing yourself? How do you manage, and what are the instructions, and what barrier you face at your workplace which doesn't let you work the way you want to work, and what would be your strategy to overcome implementation problems or putting theory into practice? Because generally in the training institutions, in trainings and every where, especially even if it is police or other, we talk about the ideals, and rightly so. If there we will talk about the practice, I mean, people would accept as a norm, and that would be allowed. I mean, it would be, people would consider, they become relaxed. Okay, this is the norm, and this is what happens actually, and we forget about the law and the theories. And so uh, what are your views? Do you think you are empowered to do whatever you want to do, or empowered you are to manage yourself? If you want to manage yourself in a better way, improve your own situation and situation of the court, and looking at your other responsibility too, your family life and your life as part of society, uh, what is your response to this question, your empowerment of managing yourself? असल में ये मैनेजमेंट अपने टाइम की हमें खुद करनी पड़ती है। केसेस हमारे पास 25 से 30 केसेस डेली लगे हुए होते हैं, तो उसकी टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करते हैं हम लोग कि अपना को जो भी विटनेस, अगर जो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, साइड पर है, जो भी आया हुआ है, तो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ पे रखा हुआ है। क्रॉस एग्जामिनेशन अगर से नहीं हो सकता है उसका, और दूसरी पार्टी का वकील नहीं है, तो वो बेहतर ये करते ये है कि भाई अगर से उसका एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड कर लिया उसके वकील की मौजूदगी में, दोनों का विटनेस जो भी है, फिर जो है वो रख देते हैं उसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। जो उसके वकील जब आ जाता है तो वो आगे क्रॉस कर लेता है। इस तरह से टाइम की सेविंग भी हो जाती है और दोनों पार्टी अपने तौर पर मुतमईन भी हो जाती है। और दूसरा ये है कि इस तरह से अब ये जो है ना, ये इस तरह नहीं करना पड़ता कि हम नंबर वाइज, एक नंबर पर केस लगा हुआ है, एक नंबर 20 पर लगा हुआ है, तो अगर जिसके विटनेसेस 15 नंबर पर जो केस लगा हुआ है उसके विटनेसेस आए हुए हैं तो उसके चला देने चाहिए। वो चला देते हैं तो उस तरह से ये होता है कि हमारा काम भी निकल जाता है और जो है ना वो पार्टीज का वक्त भी बच जाता है। इसी तरह से जो जजमेंट राइटिंग है, अब उसकी एकदम हर चीज़ फैक्ट्स भी हम लिखेंगे,
उनके एविडेंस भी लिखेंगे एक ही दिन में, तो ये चीज़ जो है टाइम टेकिंग हो जाएगी। टाइम टू टाइम हम वो केसेस जो है जो जैसे चलते जाते हैं उसका प्लेंटिफ वर्जन जो वो प्लेंट का वो फैक्ट्स जो भी होते हैं वो लिखते जाए आस्ते 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 हम और विटनेस प्लेंट के फैक्ट्स लिख लिए, फिर उसने जो डब्ल्यू एस में उसने रिटन स्टेटमेंट जो उसमें जो उसका वर्जन है वो उसका हमने लिख लिया, यानी उसकी प्लीडिंग्स हमने पहले से ही तैयार कर ली। बाकी बचती है एविडेंस, और जब जजमेंट राइटिंग का टाइम आएगा हमारे पास तो वो फैक्ट्स उसके पहले से लिखे होते हैं, जजमेंट हम और एविडेंस वगैरह उसकी डिस्कस करके टाइम इसमें काफ़ी सेव हो जाता है। ये इस तरह के तरीक़ेकार है। कुछ Okay, टाइम thank you. सेव करने का तरीक़ेकार, हर बंदा जो है ना अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलता है, हर जज Yes, थैंक यू। I have a question for the audience. Is there any judicial officer sitting here who can say, I have devised a system for myself of time management, which works most of the time for the court, for that officer? I mean, is there anything, for example, which can work 90% of the time smoothly? Any experience, any system? Definitely you are very responsible officers of the court, and you must have developed some system of work where you want to finish your work or you want to achieve a day's objectives within a time frame, and you are not uh, put off road due to certain undue, you can say, interference from some side. So, is there any way you have a plan of the day? You have made your mind over time that okay, this system works for me. Please share it with the others for their benefit. Sir, ever since I have been in this job, मैंने एक चीज शुरू से की है कि मैं 2 बजे के बाद जैसे मतलब कोर्ट का काम खत्म करती हूँ, व्हेन आई रिटायर टू माय चैम्बर, तो मैं जो अगले दिन के आने वाले जो केसेस होते हैं उसकी कॉज लिस्ट मंगवाती हूँ और वो केसेस मंगवाती हूँ अपने चैम्बर में। मैं उनको देखती हूँ, उनकी डायरी जरूर पढ़ती हूँ लास्ट की, और ये देखती हूँ कि केस किस स्टेज पर है, ताकि जब मैं कल कोर्ट में हूँ तो मुझे पता हो कि कौन सा केस ज्यादा टाइम टेकिंग है और उसका मुझे पहले से पता होगा। कोई चीज सरप्राइजिंगली नहीं आती, और ये यही वजह है कि अल्लाह का शुक्र है मैं केसेस को जल्दी टेकअप भी कर लेती हूँ। और मैं वकील, इससे पहले के वकील साहिबान मुझे ये कहते हैं कि मैडम केस की स्टेज, मैं उनको बताती हूँ वकील साहब आज आपको ये चीज देनी है, आप टाइम फिक्स कर लें ताकि आप दे दें, उसके बाद उस पर ज्यादा डिस्कशन करनी नहीं पड़ती और टाइम सेव हो जाता है। और फिर मुझे पता होता है कि कौन सा केस में टाइम लगेगा और किस पे मैंने लास्ट डेट को इनको डायरेक्शन दी थी, वो डायरी में भी लिखी हुई है, तो इसलिए मुझे इसको टेकअप करके इसको ये ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको ज्यादा टाइम देना है। थैंक यू सो मच। Thank you very much for sharing your experience. Is there any other best practice known to anybody else? Please share it. How can we use our time efficiently and to achieve our objectives? Yes, man, Neelam. जी सर, Go ahead. आई थिंक सब जो जजेस हैं सबको टाइम मैनेजमेंट आती है। तो जाहिर सी बात है हर किसी के पास अलग अलग पेंडेंसी है और हर कोई अपने हिसाब से उसको मैनेज कर रहा होता है। पर मेरी सिर्फ एक सजेशन है, आप सब जैसे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, बस ये है कि जो सीनियर सिविल जजेस होते हैं ना, उनके पास बहुत पेंडेंसी होती है और उनकी एक एक जो जजमेंट होती है वो तो पता नहीं कितने पेजों पे मुश्तमिल होती है। मैं खुद लिखती हूँ, मुझे पता होता है क्या लिखना पड़ता है, कितनी कौन सा लॉ, ये वो सारी एविडेंस वगैरह डिस्कस करके इवन उनको पढ़ना भी पड़ता है। तो जैसे आई थिंक जैसे हाई कोर्ट में होता है कि एक दिन उनका जजमेंट का होता है, तो काइंडली अगर ऐसा हो जाए कि सीनियर सिविल जज जिसके पास पेंडेंसी बहुत होती है, अब हमारे पास हम रिटायर करते हैं 2 बजे और उसके बाद हम फाइल पढ़ते हैं, फिर बुलाते हैं स्टेनो को कि आजा भाई हम अब लिखे, फिर लिखना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें से एक आपका फ्रेश माइंड नहीं होता, एक होता है ना जो आपको अच्छी सी जजमेंट लिखने का टाइम हो, क्योंकि आप सारा दिन कोर्ट में बैठ के विटनेसेस हैंडल कर रहे होते हैं, कभी क्रिमिनल के, कभी इसके, कभी उसके। ऐसे में आपका जो माइंड जो सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन हो रहा होता है ना।
इसमें आप फ्रेश कोई इतनी जजमेंट अच्छी आप दे नहीं पाते। तो मेरा ये है कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर ऐसा है कि कोई एक दिन, जैसे बंदा 15 दिन या कुछ 1-2 दिन बंदे को ऐसे मिलने चाहिए जिसमें आप जजमेंट राइटिंग करें, जो आप बैठ के सुकून के साथ फाइल पढ़ के सारा स्टेटमेंट सारा कुछ आपको देना पड़े। वरना हम लोग तो आपको पता है कि कैसी जजमेंट्स होती हैं लोगों की, कभी फैमिली में भी कट एंड पेस्ट चलता रहता है, कॉपी पेस्ट चलता रहता है, और दूसरे सिविल के हवाले से अगर सक्सेशन एप्लीकेशन ऑर्डर्स होती हैं, ये मतलब वो होता है ना, काम निपटाने वाली बात होती है कि फिर वो अच्छी बात नहीं आती है ऊपर जजमेंट्स में कि हमारा अच्छा कोई जजमेंट हो या ये हो। हम फिर निकाल लेते हैं, कई वेबसाइट से ले लेते हैं कोई लीगल ला ये वो करके, फिर भाई चलो ठीक है ये हो गया, रिटन स्टेटमेंट लिख दिया, प्लीडिंग्स आ गई, अब ये हो गया, आर्ग्यूमेंट लिखो, ये करो वो करो, ये सारा कुछ। फिर मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सुकून होता है जजमेंट्स राइटिंग में, जैसे हमारे अपर कोर्ट्स में होता है कि भाई उनकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जजमेंट्स होती हैं, पर सीनियर सिविल जज होने के हवाले से जैसे मेरे पास 300 से ज्यादा केसेस हैं, 370 से ज्यादा, तो आप खुद सोचे रोजाना की बुनियाद पे 30 केसेस ये वो। और दूसरी बात तो मैं लेंदी डेट्स भी नहीं दे पाती, क्योंकि हर किसी का हक होता है कि वो अपना केस आके कर सके, जैसे 15 दिन में, 12 दिन में, 10 दिनों में उनकी हेयरिंग्स हो जाए। तो ये मेरा कहना था कि अगर अच्छा आपको क्रिएटिव काम चाहिए तो थोड़ा टाइम भी हमें, मतलब जैसे होता है ना को वो आप दे सको, कोई वीक में एक हो, 15 दिन में कोई एक डे हो, जजमेंट डे के बुनियाद पर हमें वो कर सके, मतलब राइटिंग जजमेंट कर सके हम अच्छी सी। ये बस मेरा कहना था सर। His Lordship Mr. Shahid Shafiq Saab is here, and definitely he is going to convey this suggestion to his higher ups, and possibly they must be exploring this idea earlier too, and your suggestion will support this case. Definitely, if you have so much of important work to do, that is judge writing a judgment, and all the appeals ultimately depend on that judgment, outcome of those appeals. So it is very important that you should have separate time for writing judgments. So let's go to the next slide. So we finish within time. There is an assignment. Access the course portal, go to assignment section, fill in the assignment form information and submit. And assignment content is list 3 decisions you can make to have a more organized workplace at the courtroom. How can you organize yourself better while you are working as a judge? And the requirement is that at least 3 decisions you make today. Okay, from today onwards, I will do this, this, and this. So my work is organized in a better way and I can achieve better results efficiently. So please, after this, you go to the site and just write those 3 suggestions or 3 decisions you have made. You can do it in your spare time or right now, whatever suits you. While we set goals, those are very beneficial. And next, it is a very commonplace thing. We generally, all of us must have studied there. The goals should be specific, measurable, achievable, and those should be relevant. We know them. It was just for a reminder because we are so much busy in other things. Sometimes it is better to revise even whatever we know already. So our whatever goals you set, those should be specific, measurable, and achievable, and should be relevant. Next, it's very important for us to manage our time, and whatever we do, those things can be categorized as urgent, not urgent, and important and not important. If the things are urgent and important, we must do them first. And if those are not urgent but important, we can schedule them
and there are things which are urgent but not important, and we can delegate, give it to somebody else. And sometimes things are not important and not even urgent. As senior judges, or if you can eliminate or give that job to somebody else, so you can save time, and you can be efficient. My own way of working was that, first of all, uh, I just look at the things, and if I think there is a clutter, I remove the clutter. So my mind is clear, and the task is very precise. Then I leave everything to the side and then go for my work. So that's how I work, and I think this is just the explanation, and we will upload these slides on the website. You can just read some of the material which is left. That generally we know those things. For example, take breaks when working, break a big task into smaller chunks. So those are practical steps, and those can just, I mean. Uh, we can achieve better results. Guidelines for assignment: access the code portal. This portal, access assignment section, fill in the assignment form information, and submit. What is the content next? Share an instance whereby you were able to manage an important task even though you had too much on your plate. What were the factors that created hindrances, and what were the strategies that helped? So please write your comments, write your what you did at that moment, and that's all for today. And inshallah, we will meet tomorrow uh, at our assigned time, 6 o'clock. And I hope I enjoyed your conversation, and I learned a lot. Although I had some experience of working in the beginning in the court, and as a police officer, uh, went to court many times, all the courts up till Supreme. Even then, I mean, our knowledge is of a very limited nature, but with interaction of the officers of the court who are serving nowadays, and they are aware of the current problems and the issues of the court, I am enlightened. I have revised my own thinking about working of the court, and that's what I appreciate, because once we talk to each other, we definitely learn, and we have some sort of improvement in our thinking. Thank you very much, and listening for whatever I have presented, and inshallah, we will meet tomorrow. Thank you. Thank you so much, Ijaz Sahab. Yes, it has definitely been a very productive one. It was quite engaging, and participants are also commenting about it, that it was a very informative session indeed. So, my 2 cents before we end this: the assignment that Ijaz Sahab has just announced, a couple of assignments will be uploaded as soon as we call off this training session. So you may be able to access the assignments by 8:30, if not before that. So please do attend the assignment and do that before we begin our session tomorrow. I would like to thank once again everyone to join on time, and it's really good to see a certain time management when we start the session. By 6 or 6:05, we are almost there with all the participants and the trainer and our team. So it's good that we are learning time management, and we are practicing it at the same time. Thank you so much, Ijaz Saab, and thank you so much all. See you all tomorrow. Allah Hafiz.